ओके, कम्बिनेशनल सर्किट में बेसिकली नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ये बेसिकली चार चीजें इकट्ठी ही डिस्कस की जाती हैं। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनकोडर। इनकोडर क्या किया करते हैं कि इनकोडर बेसिकली कंप्रेस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, और जिसमें आपके पास मैनी इनपुट्स होती हैं और फ्यूअर आउटपुट्स होती हैं, राइट। आप कन्वर्ट करते हैं किसी डाटा को इन द कोडेड फॉर्म, राइट। मींस आपके पास बेसिकली इट इन द इनकोडर यू हैव 2 raised to power n inputs and have few outputs, right? So few कितनी outputs हो सकती हैं? There would be n outputs, right? So अगर हम inputs if we have suppose n की value अगर मैं 3 रखता हूँ, so what happens के 2 raised to power 3 it means कि हाँ जी there would be 8 inputs, and how these inputs can be determined? These inputs can be encoded into how many bits? There would be 3 bits. सो तीन बिट्स की फॉर्म में ही इसको आप इनकोड कर सकते हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे बजाय इसके कि 8 to 3 इनकोडर की मैं बात करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ सर्किट ऑफ अ 4 to 2 इनकोडर, राइट। सो 4 to 2 इनकोडर की बात करूँ, यानी व्हेन n इज इक्वल टू 2। सो 4 to 2 डिकोडर में यू हैव D naught, D1, D2, D3. These are the inputs, and there would be how many outputs would be? There would be two outputs. So the first one is X and the second one is Y, right? अब हम D naught अगर 1 है, अगर D naught 1 है, so what happens? This is going to be 1 and all the rest would be 0. Okay, so this is the case when this one, how it would be encoded when x and y both are 0 0. So similarly, if this one is 1, then it should be d1 is 1, then it should be a 0 1. X and y would be 0 1. If d2 is 1, then it should be a 1 0. And if d3 is 1, then what happens? This one is going to be 1 1. So हो क्या रहा है इनकोडर में? बेसिकली आप किसी एक इनपुट को आप इनकोड कर रहे हैं, और हाउ इट कैन बी इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ द एन आउटपुट्स, राइट। सो अब हमने कहा कि हाँ जी कि हमारे पास 4 इनपुट्स थे, और हमने इसको कितने आउटपुट में इनकोड किया? वी हैव 2 आउटपुट, राइट। सो इफ दिस वन इज अगर तो डी नॉट सिर्फ 1 है, और इनकोडर में क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट, मल्टीपल इनपुट्स में से सिर्फ एक इनपुट 1 होगी and the rest would be 0 0. So what happens? How it can be implemented? To implement this one, अगर आपने इसको implement करना है और मेरे पास दो आउटपुट हैं, the one is a x and the second one is a y, how it would be implemented? We'll draw a circuit. So here is a circuit of 4 to 2 encoder. Keep this thing in mind कि okay, हो क्या रहा है कि हमारे पास x कब 1 1 आ रहा है? when d1 d2 is 1 and d3 is 1. सो हमने d2 और d3 दोनों के साथ और गेट यूज कर दिया. सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी यहाँ पे y इन दो केसेस में 1 आ रहा है when d3 is 1 and d1 is 1. सो व्हाट हैपेंस कि ये दूसरा और गेट हमारे पास यहाँ पे बन गया. सो whenever we get this one is 1 and this one is 1, what does it mean? It means कि हाँ जी कि आपके पास d3 is D3 आपको आउटपुट पे मिल रहा है, right? Similarly, D3 is going to be encoded in the form of X is 1 and Y is 1. What happens if this is Y is 0? So what happens? It means कि Y 0 है, तो it means कि ये दोनों की दोनों inputs 0 हैं. That's why Y is 0. So the only input that is basically is going to provide output 1, that is D2, और D2 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी. So that's why ये D2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया. कीप दिस थिंग इन माइंड कि डी नॉट के साथ हमने कुछ भी नहीं अटैच किया हुआ. सो व्हाट हैपेंस कि अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू 0 0 होंगी, सो इन दिस केस
yeah, it would be a D naught would be encoded over there, right? So this is how basically 4 to 2 encoder works. Similarly, you can design a 8 to 3 encoder as well, right? So so that's basically all about the encoder. In the next lecture, we will discuss about the decoder.